Hey, children, if you are here, please, come to the national flag. You are jewels of our area, and we would definitely want you here. So we'll start with the national flag hosting. We have our Vice President and Secretary here. I would request Rafi Sahab and the team to do the honors. Call the chief guest. Ready? Full volume. Call the chief guest. Well. I would request M.A. Siraj sir to please come forward. Please hoist the flag with your hands. It would be a great moment of pride for us. Thank you. Help him pull the right rope. Play. Play karo. Last number, play karo. Wait. Play karo. भारत माता के जय हिंद। भारत माता के जय हिंद। भारत माता के जय हिंद। ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೇರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. Now we will move the program to the children's staging area. We have chairs there. Please request to get yourself seated. ಈ program ನಾವು staging ಹತ್ರ move ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಬೇಕಂತ. Hello. Hello. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ, ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಎನರ್ಜಿ. We'll event now. So see, the itinerary of the event is we'll start with a quick intro by Honorable Vice President Zafrullah Sir on the introduction of M.A. Siraj sir, who is a well-known name in the field of journalism.
We'll have a students' felicitation ceremony later. I hope children who are getting felicitated have all joined us. Jin bachon ka, we have, they have scored excellently in their SSC exam. Can you please lift your hand? I just want to see a count how many of us you are here. MashaAllah, students. Okay. How come only the girls? If girls score kar rahi hai, do hi ladke. Boys are also there. Hey boys, where are you? If you are not here, you'll miss your bags and certificates. MashaAllah, we have 2 boys here. Girls always lead the back and they see they are early here in the morning, seated here. Women power says Secretary Rapisa. So we're just waiting for a small operational part. We are waiting bags. They are just nearby. We'll get them. So. So now ask our Vice President Zahra Saab to come forward and give a brief introduction about our noted journalist here and Chief Guest Siraj. I'll hand over to Zahra Saab. Thank you. ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಅಹಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಅಹಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ known as M.A. Siraj, is a well-known name in the field of journalism and editorial write-ups in both national and international media. He did his graduation BSc and MA in Mass Communication and Journalism. He worked with BBC World Service in Karnataka and he writes regularly for Deccan Herald and several other magazines and journals. He was also on editorial board of Islamic Voice, English monthly from Bangalore. He is a very sincere social worker working for the upliftment of society. He is involved in guiding, counseling and helping students with scholarships through various trusts in Bangalore and Delhi. He is on the board of trustees of many trusts like Talent Promotion Trust, Danish Education Trust, Millat Relief Trust, Lifeline Microcredit Society, Millat Management Society, Ashiana Boys Home, all in Bangalore. He is also an educational advisor for Muslim Orphanage, Bangalore. So today we are privileged and honored to have Janab Maqbul Ahmad Siraj Saab as our chief guest in today's Independence Day celebration. It has been the tradition of our Residents Welfare Association to honor people who work for the welfare of our society and community. Last year also, we had honored about 8 residents of our layout involved in service to humanity. Thank you. Now, I'll hand it over to Ms. Ratsa for a few words of knowledge. It's great to hear you, sir. Good morning, Namaskar and Assalamu Alaikum to all of you. Dear friends, ladies and gentlemen, sisters and brothers, it is a happy occasion for all of us that we are celebrating the 76th Independence Day. Last year we celebrated the Platinum Jubilee of India's independence. A great nation, which is 7th largest in the area, but most populous of late. We have just taken over China this year. In April, India's population overtook China's population. That way we are the greatest repository of the human beings. सबसे ज़्यादा इंसान दुनिया में अब हिंदुस्तान में रहते हैं.
which is only 4% area of the world, but 16% population of the world. A country full of talents, a country which is quite young, but at the same time has a civilization which goes back to about 5,000 years of known history. America is the most powerful nation in the world, but it has a history of about 500 to 600 years. In 1492, Columbus discovered America, and from there on, the civilization started. China too is a very historic country. Its civilization and history goes back to about same as India, and much more economically powerful than us. We are two in the race, and we are currently the fifth most important and large economy. The per capita income is quite low. But during the last 75 years, if you cast a glance over the history of India, you will find that this country has risen from poverty, from food insecurity. It was all because of the visionary people. The people like Mahatma Gandhi, people like Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister, Dr. Rajendra Prasad, Patel, Nazar, Dr. Ambedkar, who was the architect of the Constitution. These were the people who were the visionaries, who imparted India a trajectory whereby it could become a developed nation, a secular nation, a plural nation, carrying many languages. China is of course the very large country. It has only two languages, Mandarin and Cantonese. But we have about 22 languages. And a country which has so many languages, which is so diverse, it's very, very difficult to keep it united. But our vision forefathers, they laid a constitution, they laid a foundation whereby we could all live together. Live together, love together, eat together, and develop together. It is a country with about 75% literacy. At the time of independence, it had literacy of about only 16%. Today we have about 200 universities, about 800 laboratories. All this development came about with the joint effort of the politicians who were very visioned and many bureaucrats. I'm almost. I am 68 now and have traveled across at least 300 cities in India. Having reported events, conferences across the nation. And about 15 countries. About 15 countries around the world. And the story of India is very breathtaking. A country to have risen, a country which did not have enough resources. America has plenty of resources. Russia is the largest country area-wise. Canada is second largest. But India's area is only about 4%. So for a country to have developed like this, it was a joint effort between the bureaucrats and the politicians. I told you about the names of the politicians, but there are a number of people who have contributed to the scientific development, technological development of this nation. I lived in several parts of India. My father used to be in central services. In 1967, I was in 10th standard. And I have seen the kind of famine which gripped North Indian states.
There was no food available. America started giving us food and rationing system was introduced. For 2 years there was continuous drought. Indira Gandhi had just become Prime Minister. She brought in M.S. Swaminathan from Manila, who was working with Rice Research Institute in Manila, in Philippines. Mr. Swaminathan worked for about 14 years and he made it a food secure state. In 1982, India became a food secure state. After that, we are not imported food. Today, even if there is a drought for about 2 years, India can still feed the millions. About 360 million tons of food is always there in the warehouses of Food Corporation of India. It is a great achievement for a nation which was starving, which was famished, which was being stricken by famines every year, to become a food secure state in 1982. After that, we have stopped food import. 1980, we started the first car manufacturing industry of Maruti. Today we have plenty of cars. If you go to African countries, our cars are running on the roads of Africa. And there are so many cars that our roads are congested. They have fallen short in space. This was the second revolution, automotive revolution. First was the green revolution, second was the automotive revolution. Rajiv Gandhi in 1987, he brought Sam Pitroda from United States. Sam Pitroda hailed from Odisha, but he was working in United States. He brought in the telecom revolution. Those who are more than 50 years of age, they would remember that in 1980s, if they had to make a call to their relatives in Mysore, they would have to go to the telegraph office, stand in the line, and he will dial the number 3 times, the person on the desk. If the call does not get connected, you will have to again go back to the queue. Today, perhaps every single of you is having a phone in your hand. Sam Pitroda brought the telecom revolution. Because of this telecom revolution, the computers also came in. And we are the largest internet using and mobile using country in the world. We are going for rainbow revolution. Rainbow revolution, perhaps not many of you would have heard. It is about the fruit, flowers and vegetables because they look like rainbow. So these are the major developments. Today or tomorrow our Chandrayaan will be landing on the moon. This is the third attempt we are making our satellite to land on the moon. It has all been possible because of one person, Mr. Kasturi Rangan and CNR Rao. So these are the peoples to which our heart goes today. And we are a country which is a developing country but very soon to be a developed country. So we need to be visionaries. We need to produce people who think about the nation, who think about the people, who think about how we can bring relief to hundreds of millions of people who live in this country. Today, the 76th Independence Day, we dedicate ourselves to the memories of these people. And we owe a debt. Not many countries in the neighborhood of India were as fortunate as India. Some of them are still suffering with the food shortage. Some of them are suffering from water shortage. There are shortages, of course, even in India. But at the same time, India is contributing to the development of many such countries. If you go to the Gulf countries, near 3 million Indians are working over there. They are contributing to the development of the Arab and Muslim countries. India is a reservoir of technicians and technologists. If
you go to United States, if you go to Silicon Valley in California, majority of the people who are working over there are from India. So this is the way we have developed during the last 76 years. We need to contribute even more to this nation. We need to rededicate ourselves for the development of this nation. With these few words, I bring my speech to the end. Thank you very much for having invited me. I congratulate all of you that you have constructed a beautiful colony and you are concerned with the development of the younger generation. I hope you will produce many more visionary young people so that they become pillars of this nation's development. Thank you very much. Thank you, Siraj sir. The JHBCS Resident Welfare Association will now honor Honorable Chief Guest Siraj sir. It was a wonderful speech. Now, हम सब बात करते हैं, लेकिन we have one amongst us, Sheikh, who is an excellent orator. माशाल्लाह, शेर की तरह दहाड़ने की उनकी जो स्पीच है, वे थोड़ा कन्नड़ में देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन it depends what he wants to talk. We'll give the mic to Sheikh for a few minutes to enlighten us. Thank you. बिरादरान वतन, बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये जो 15 अगस्त हम हर साल मनाते हैं, ये आज़ादी कुछ यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे बहुत सारा खून खराबा हुआ। बहुत सारी मायों ने अपने बच्चों को खोए, बहुत सारी बीवियों ने अपने शोहर खोए, बहुत सारे बच्चे यतीम हुए। इनमें मुसलमानों का भी किरदार है। देखने जाएं तो पाकिस्तान के अलग होने से पहले हिंदुस्तान में हम 1/4 हिस्सा थे, तो पाकिस्तान के अलग होने के बाद एक 5वां हिस्सा बन गया। 1/4 हिस्सा होते हुए भी हर एक आजादी की लड़ाई में आधे से ज्यादा मुसलमानों का किरदार रहा। ये झूठ कहते हैं वो लोग जो आजादी की हिस्ट्री बताते हैं पिछले 50 साल पहले, 60 साल पहले, 80 साल पहले की। असल आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी 1740 के बाद से, जब शेर बंगाल सिराजुद्दौला रहमतुल्लाहि अलैह बंगाल पर नवाब बनकर हुकूमत करते थे। 23 साल की उम्र के बादशाह थे जब मीर जाफर ने बगावत की और अंग्रेजों के साथ मिलकर साजिश की, जिसकी वजह से उनको बैटल ऑफ प्लासी हारना पड़ा। फिर उसके बाद मीर जाफर का बेटा मीर मीरा उनको फांसी की सजा देता है, फांसी पर लटकाता है। तब उनकी उम्र 24 साल थी। यानी आज के डेट में कोई जब कॉलेज पढ़ करके बाहर निकलता है, उस उम्र का 24 साल बादशाह, आज भी उसे हम लोग शेर बंगाल के नाम से जानते हैं। जब तक शेर बंगाल जिंदा था, ईस्ट इंडिया कंपनी की जुर्रत नहीं थी कि वो हिंदुस्तान की जमीन पर हुकूमत करती। तो जैसे ही सिराजुद्दौला का इंतकाल हुआ, जैसे ही वो शहीद हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत शुरू हुई। फिर इसके बाद में बहुत सारी चीजें हुई। यहाँ दक्कन में हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह। कोई एक बादशाह मुझे बताओ जो हिंदुस्तान की जमीन की लड़ाई में ब्रिटिश के खिलाफ 4 जंग लड़ी हो, 3 जीती हो और 1 जंग हारे। वो इस वजह से हारे कि हमारा ही खून नवाब था, हैदराबाद का निजाम और मराठों ने मिलकर के ब्रिटिश के साथ हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के खिलाफ जंग छेड़ी। लेकिन यहाँ पर भी एक मीर सादिक, मीर मोइनुद्दीन, ये लोग मिलकर के बगावत किए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जिसकी वजह से हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद हुए। हजरत टिप्पू सुल्तान से कहने वालों ने कहा कि भाई अगर हम हथियार डाल देते हैं, अगर हम हथियार डाल देते हैं तो हमारी जान सलामत रहेगी। टिप्पू सुल्तान मान लीजिए अंग्रेजों की बात, हथियार डाल दीजिए। हजरत सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह एक बात कहे थे। वो बात क्या थी? गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी काफी है, और वो शहीद हो गए। वहां से सीख मिलती है कि मुसलमानों का जो किरदार रहा है बहुत ज्यादा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर
आखिरी मुगल सल्तनत के आखिरी चिराग बहादुर शाह जफर दिल्ली में एक छोटी सी सल्तनत चला रहे थे। सिपाही म्यूटिनी जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूलों में, सिपाही म्यूटिनी, द ग्रेट इंडियन रिबेलियन जिसको कहते हैं। ये ब्रिटिश यहाँ पर व्यापार करने की नीयत से आए, व्यापार करते करते हम पर हुकूमत करने लगे। फिर उसके बाद हमारे ही लोगों को लेकर अपनी आर्मी बनाकर हमारे ही लोगों को लड़ाते थे। तो बहुत सारे उलमाए कराम, हजरत शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से शुरू होती है ये बात। 1804 में हजरत फतवा जारी करते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना हमारे लिए ऐन फर्ज है। उस वक्त का हक है कि ब्रिटिश को इस मुल्क से मार भगाए। उनको इधर से भगाने के लिए पूरे मुल्क का दौरा करते हैं हजरत के भतीजे और हजरत के बेटे अहमद सईद, पूरे मिलकर के पूरा मुल्क का दौरा करते हैं, चारों तरफ से कोशिश करते हैं। कोशिशें नाकाम रहती हैं, लेकिन आजादी की लड़ाई तो वहां से शुरू हुई थी। यहाँ सिराजुद्दौला के साथ जो जंग होती है, मतलब 1857 की जो रिबेलियन होती है, इस रिबेलियन में जो रिबेलियन का कसूरवार, इसके इल्जाम में इनको गिरफ्तार किया जाता है। 80 पर 1 साल इनकी उम्र होती है। बर्मा की रंगून की जेल में इनको ले जाकर डाल दिया जाता है। यहाँ पर डालने के बाद इनके 4 नौजवान बच्चों को इनकी नजरों के सामने कत्ल किया जाता है और इनके सरों को एक तबख में रखकर, एक ट्रे में रखकर इनके सामने पेश किया जाता है। तब भी वो कहते हैं कि जब तक मुसलमान के दिल में ईमान की हरारत होगी, तख्ते लंदन तक तेग ये हिंदुस्तान की दिखाई देगी। मतलब ये जो तलवार की चमक है, इससे तो ब्रिटिश डरेगा। और जैसे ही हजरत का इंतकाल हुआ, यानी उनको फांसी दिया गया, और जैसे ही हजरत को फांसी दी गई, वहां से ब्रिटिश की जुर्रत इतनी हुई कि ये हिंदुस्तान में एक कानून शुरू किए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोल के एक एक्ट फॉर्म किए पार्लियामेंट लंदन में, लेकिन एक्ट फॉर्म हुआ इधर इंडिया में कि ब्रिटिश के कानून के हिसाब से जो भी केसेस होते हैं, जो भी चीजें होते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट, ये सब तो सिस्टम है, ये ब्रिटिश के कॉपी सिस्टम है हमारे यहाँ। तो ब्रिटिश का सिस्टम शुरू हुआ हजरत बहादुर शाह जफर के इंतकाल के बाद। तो इसके बाद में उलमा इकराम का बहुत बड़ा किरदार है। 1857 के बाद 1866 में दारुल देवबंद कायम हुई, 1914 में जमियत उलमा हिंद कायम हुई। ये 1914 तक का सफर बहुत सारे मुसलमान उलमा इकराम, मैं तो यूं कहूं कि जो सिपाही म्यूटिनी हुई उसके अंदर 2 लाख लोगों को शहीद किया गया। इसके अंदर 52,200 सिर्फ उलमा इकराम थे। वो कितने मुसलमान थे अल्लाह जाने बेहतर, लेकिन दारुल देवबंद की तारीख में ये बात में पढ़ करके आपके सामने सो में कोई मंतरक बात नहीं करता, आप जाकर के चेक कर लीजिए। 50 पर 2,000 उलमा इकराम शहीद हुए थे। ये उस उलमा इकराम की शहादत थी कि ब्रिटिश मुसलमानों से डरता था। फिर उसके बाद में आजादी की लड़ाई लड़ी गई। ऐसे नहीं कि 14 अगस्त को पूरे ब्रिटिश निकल के ऐसे ही लंदन चले गए। इनको मजबूर किया गया कि हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, हम टैक्स नहीं भरेंगे, हम आप ही के खिलाफ जंग लड़ेंगे। बहुत सारे हमारे हिंदू भाइयों को भी फांसी दी गई, काला पानी दी गया, लेकिन काला पानी 33 साल की ब्रिटिश हुकूमत में, यानी 200 सालों की हुकूमत चली, काला पानी बनने के बाद 33 साल में 80,000 लोगों को उस जेल के अंदर डाला गया, जिसके अंदर 56,000 मुसलमानों को काला पानी की सजा दी गई। मेरे रब की कसम, उसमें से एक मुसलमान भी एक मर्जी पिटीशन नहीं लिखा, लेकिन कई ऐसे लोग जो मर्जी पिटीशन लिखते थे, उनकी औलाद